नमस्कार। तकरीबन 24 घंटे पहले यही वक्त था और यही वो जगह थी, कॉफ़ी होम दिल्ली का, जहां पर मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध जैसे तनाव को लेकर आम लोगों की राय ले रहा था कि ये युद्ध कहां तक जाना चाहिए और आपको क्या दिखाई देता है, ये कितने दिन में ख़त्म होगा, या जो तनाव दिखाई दे रहा है वो कहां तक पहुंचेगा और ये इसका अंजाम कहां तक जाकर ख़त्म होगा। मैं पूरा कार्यक्रम कर भी नहीं पाया था कि इसी बीच खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान उन्होंने कर दिया है, यानी युद्ध विराम का। और इसके बाद भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खैर वो बात आपको मालूम है, भारत ने ऐलान कर दिया कि सीज फायर हो गया है। डीजीएमओज ने बात की 3:30 बजे और उसके बाद 5 बजे के बाद सीज फायर है। लेकिन अंधेरा होते ही श्रीनगर, पंजाब के कई इलाकों में फिर विस्फोट की खबरें आने लगी और कहा गया कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके धमाके करने शुरू कर दिए। जवाब में भारत की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। रात होते होते 11 बजे तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए और उन्होंने कहा कि अमेरिका का बहुत धन्यवाद, ये जो तनाव था अमेरिका ने इसमें दोनों देशों के बीच संधि जो सीज फायर कराया उसकी भूमिका को लेकर कहा। हालांकि भारत सरकार ने और भारत की तरफ से अमेरिका की किसी भूमिका को उसकी घोषणा नहीं की गई, अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया गया। बहुत लोगों का ये मानना है कि महा उत्साही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही चौधरी बनने के फिराक में उन्होंने ये घोषणा कर दी। बहरहाल आज का अपडेट अभी तक का जब ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ तो ये है कि भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब नया भारत है जो घुस के भी जवाब देता है, बाहर भी बताता है और अंदर भी बताता है। और भारतीय वायुसेना ने सीज फायर के बाद भी भारतीय वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। कुल मिला के सीज फायर का ऐलान और सीज फायर की खबर आते ही एक बार सबके दिमाग में ये सवाल आया कि अरे अभी तो ये युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, कहाँ तो हम सुबह 10:30 बजे की जो सुबह की ब्रीफिंग थी, संवाददाता सम्मेलन, उसमें सरकार और सेना की तरफ से बताया कि हमने पाकिस्तान के 5 एयरबेस को तबाह कर दिया है और कहा 7 घंटे बीते कि सीज फायर हो गया है। बहरहाल युद्ध कभी भी कोई रास्ता या समाधान नहीं हो सकता, लेकिन कई परिस्थितियों में युद्ध शांति के लिए जरूरी होता है। आज की ये स्थिति है। सीज फायर के बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। क्या क्या बातें हो रही हैं वो कार्यक्रम के अगले हिस्से में मैं बताते चलूँगा बातचीत के सिलसिले में। लेकिन देश का बिल्कुल आम आदमी इस सीज फायर को 4 दिन तक चले युद्ध के बाद इस सीज फायर के बारे में क्या सोचता है और उसकी सीज फायर को लेकर क्या विचार है, माहौल क्या है, मैं यही जानते हैं। कॉफ़ी होम में बैठा हूँ, संडे का दिन है, आपको पता ही है, गर्मी धूप दिल्ली में, और वैसे भी सड़क चलते लोगों से ही अपेक्षा करना कि सीज फायर या सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें तुरंत मिल जाए। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आपसे मैं कई बार कहता हूं कि कॉफ़ी होम में बैठने वाले लोग थोड़े चिंतनशील और सारे विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं। तो कई बार इस तरह के मुद्दों पर मैं ये जगह अगर दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे मुफीद लगती है। तो आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम है कैप्टन आई सिंह भदौरिया। अच्छा। और वर्तमान में सेवानिवृत्त हूँ आर्मी से। वैसे तो आर्मी का जवान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, एक तरह से ये कहेंगे कि अवकाश पे होता है। जब भी उसकी ज़रूरत होती है आर्मी को, तुरंत आर्मी कहती है तो वो आर्मी जाके दोबारा अपनी सेवा फिर देना शुरू करता है। इसलिए हम भी कभी नहीं कहते हैं कि हम एक्स हो चुके हैं, ये कहते हैं कि छुट्टियों पे ज़रूर है। तो अपनी आज भी सेवा जहाँ ज़रूरत पड़ती है, देश को पड़ती है, पत्रकारिता में पड़ती है, राजनीति में पड़ती है, हर जगह अपनी सेवा बरकरार दे रहा हूँ टाइम से। अब मैं आपको किसी पार्टी से भी संबंध रखते हैं आप? हाँ, बीजेपी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी के लिए पत्रकारिता से भी थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, बीजेपी के लिए कोई बात नहीं है, मैं उसको क्लियर करते कि हम स्पष्ट आर्मी वाले हैं तो बड़ा स्पष्ट बोलना बड़ा
सही नहीं, क्लियर करना बड़ा जरूरी रहता है ना। जब पहले ही पता चल जाता है तो दर्शकों को भी क्लियर रहता है दिमाग। तो बिल्कुल बीजेपी के लिए डिबेट भी। तो अभी मैं आपको बीजेपी के तरफ से या बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, बल्कि देश के आम आदमी या सैनिक के तौर पर, सेना से जुड़े व्यक्ति के तौर पर, इस सीज फायर की घोषणा जब हुई तो आपके दिमाग में क्या कौंधा सबसे पहले? बहुत अच्छा सवाल लिया है आपने। बुद्धिजीवी पत्रकारों का यही एक सवाल होता है जो देश से जुड़ा हुआ हो। जब घोषणा हुई तो जो मेरी अपनी सोच है, मैं इसमें पार्टी और उसको नहीं लाऊंगा, ये मेरे व्यक्तिगत अपने ओपिनियन है। जब घोषणा हुई तो उसमें मेरा एक ही विचार था कि भारतीय सेना जिस तरह से कार्य कर रही थी, बहुत ही उम्दा किस्म का कर रही थी। जो इनको टारगेट इनके सामने थे, पूरे टारगेटों को ध्वस्त करती चली जा रही थी, कहीं से कहीं कोई रुकावट नहीं थी। उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी उनके एयरबेस थे पाकिस्तान के, वो हमने 10 एयरबेस मात्र 25 मिनट में उड़ा दिए। उनको चलने लायक नहीं रखा, उनको किसी लायक नहीं रखा। जिसके एयरबेस ही उड़ जाएं तो वो फ्लाइटिंग नहीं कर पाएगा। और उसमें आज जो हमारा सबसे बड़ा हमारे जो रॉकेट है, और जो हमारा एक रसिया से हमें मिला है S4 जो हमें मिला, एयर डिफेंस सिस्टम S400, तो उसने जो इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई है बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी आप तारीफ करें, उसका जितना कहें, बहुत ही वो एक सोच से भी परे निकल गई। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर एक बार में 500 ड्रोन छोड़े हैं, और वो एक भी ड्रोन हमारे यहाँ कारगर नहीं हुआ। एक भी जगह हमें जबकि उसने हमारे सेना के ऊपर अटैक नहीं किया है। जितने भी हमारे रिहायशी क्षेत्र थे, आम पब्लिक से जुड़े हुए प्लेस थे, उन पे अटैक करवाया है, मगर एक भी जगह उसका अटैक कारगर नहीं हुआ है। क्योंकि इसका मुख्य कारण जो S400 हमारा जो तैनात था। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ भदौरिया साहब, वो जो अटैक की बात तो अब खत्म हो गई। वो जो हुआ, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इंडियन एयरफोर्स ने कहा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैठा था और जैसे ये घोषणा हुई तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे 3:30 बजे DGMO की बातचीत दोनों में हुई, और 5 बजे सीज फायर का ये ट्रंप ने कैसे इसका अनाउंसमेंट कर दिया। वो तीसरा कंट्री अमेरिका बैठा बैठा चौधरी बन रहा है बहुत ज़्यादा, और सीज फायर हो भी गया। ये इतना तो आपके दिमाग में कौधा नहीं, बिल्कुल हमारे दिमाग में भी कौंधा। हमने शुरुआत में वही शब्द आपके लिए यूज किए थे कि हमारी सेनाएं एडवांस चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। हम कहीं कोई कहते हैं ना कि मार खाने वाला हाथ जोड़ने लगता है और गुहार लगाता है, तो हम उसी स्थिति में नहीं थे, हम तो मारने वाले थे। मगर एक चीज़ हम आपको और इससे हटके कहना चाहेंगे कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो हारने वाला हो या जीतने वाला हो। तो जो भी हुआ, डिसीजन जो लिया गया, एक ये पॉलिटिकल लेवल की बात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सोचा जाता है वो एक अलग मैटर होता है। मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि नुकसान दोनों का ही होता है। हम अगर उनके ड्रोन को नीचे गिरा रहे थे तो हमारे भी उतने ही रॉकेट लॉन्चर और हमारा डिफेंस सिस्टम उतना ही उसमें सक्रिय था, उतना ही खर्चा हो रहा था, उतना ही सब कुछ हो रहा था। तो ये नहीं है कि हम उनको निष्क्रिय कर रहे थे तो हमारा कोई नुकसान नहीं था, बल्कि हमारा नुकसान और ज़्यादा हो रहा था। तो खर्चा दोनों का ही होता है, एक बर्बाद होता है और दूसरा है वो भी बर्बाद होता है, मगर वो है विजय हासिल करता है। खर्चा दोनों का ही बराबर। तो जो हुआ अच्छा हुआ। बाकी ये है, अगर 2-3 दिन और चल जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाता। आप क्या मानते हैं, सीज फायर की जब आपको जानकारी मिली, मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता सीज फायर के इस समाचार को उसने कैसे लिया? अरुण पांडे हूँ मैं, अरुण पांडे। एक्चुअली जब ये चीज़ मैं सुनी कि एकदम से सीज फायर हुआ है तो वाकई में शॉक्ड था, पूरी तरह से शॉक्ड था। स्थिति ये थी कि जैसे कहा जाता है कि जीत के मुंह से हार छीन लेना, जीत के जबड़े से हार छीन करके लाए हम जीतते हुए भी जो है हार गए हैं इस उसमें।
और मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवीन करके सीज फायर का ऐलान करेगी। आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या पता। देखिए, नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र विचारधारा रखता हूँ अपनी। मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ और इस मामले में मैं बिल्कुल कि मोदी की जो अभी तक की नीतियाँ थी, धारा 370 को लेकर के या राम मंदिर को लेकर के और ही जो देश के मुद्दे थे, वो सब बहुत अच्छे से चल रहे थे। और ये भी जो इन्होंने स्टेप लिया था, मतलब जब अपना ये पहलगाम हुआ अटैक, और उसके बाद जो ये लिया गया कि हाँ हम इससे सिंदूर ऑपरेशन करेंगे, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो ये सीज फायर किया और वो भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के द्वारा, कभी भी ये उम्मीद मोदी सरकार से तो नहीं थी कि जिस तरह की ये हार्ड कोर लाइनर को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बावजूद जा करके एकदम से, जबकि हम पूरी विनिंग सिचुएशन में जा रहे थे और ये था कि हम 2-4 दिन में उनको पूरी तरह से घुटनों पर ला देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस तरह का वो किया है कि ये शब्द में नहीं हो सकता। बहुत ही शॉक्ड ये डिसीजन है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार का बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत संयमित। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे कि ये दुनिया युद्ध नहीं सह सकती और उन्हें सबक सिखाना था। उनने सरकार की तरफ से ऐसा कहना, एक मिनट, सरकार की तरफ से ऐसा कहना कि हमने 100 से ज़्यादा आतंकी मारे, उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। इसके बावजूद इसके अलावा हमने उनके एयर बेसिस को किया, उनको 2-3 दिन में पूरी जो उनको ताकत थी, हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि नूर खान का जो एयर बेस था उनका, उससे इस्लामाबाद बहुत नज़दीक था। उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई और उन्होंने कहा कि अब सीज फायर के बारे में बात करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री उनसे बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, कोई नतीजा निकल नहीं रहा था। शायद शहबाज शरीफ ने असमर्थता दिखाई, उन्होंने वहाँ के आर्मी चीफ से बात की, बातचीत का सिलसिला हुआ, उस नतीजे पर पहुँचा। बहुत लोगों का ये मानना है कि हम अपर हैंड में ऊपर होकर के, और इसके बाद पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद हमने कहा अच्छा चलो, लेकिन आगे से ख्याल रखना। अब इसमें मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात करीब करीब सही है, लेकिन जब हमने टारगेट सेट किया था तो 21 टारगेट थे हमारे, 21 पॉइंट्स पर हमें अटैक करना था। हमने 9 पर अटैक किए हैं। हमारे अभी 12 बचे हुए थे, 11 या 12 अटैक बचे हुए थे जिनको कि हमें टारगेट सेट करना था। उस बारे में मैं ये नहीं कह, 9 तो अटैक हम किए, 21 टारगेट हमें थे और हम उस चीज में जा रहे थे। ठीक है, उस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, अभी क्योंकि जब हमारा सीज फायर हो चुका है तो हम वो 12 टारगेट को हम हिट ही नहीं किए हैं। जो चीजें हैं अभी सामने आई हैं, वही तो कह रहा हूँ, अभी उसका आना बाकी है। हमने 9 स्ट्राइक की और वो 21 पे हुई या कितने पर हुई, अभी ये बाकी है। लेकिन ये तो माना, वो तो मसूद अजहर भी रोने लगा कि काश मैं ही मर जाता। ये तो पक्का पता है कि उससे नुकसान आतंकियों। पाकिस्तान की दोगलेपन की नीति आप समझते हैं। हमेशा 71 से लेकर के हम अंदर तक घुस गए थे, फिर भी हम वापस हुए, बैरंग वापस हुए। कारगिल के बाद हम पूरी तरह से उसमें थे, अपर हैंड पर थे, फिर भी हम बैरंग वापस हुए हैं। हम इतिहास से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं इन चीज़ों से। आज की स्थिति यह है कि जब हम पूरी तरह से विनिंग सिचुएशन पे जा रहे थे और सिर्फ 3 दिन के अंदर ही, वो भी थर्ड पार्टी इन्वेंशन जिसका कि कहीं कोई औचित्य नहीं था, हम 2 पक्षी नीति पर चलते हैं, कश्मीर समझौते पर या पाकिस्तान के उसमें, ये अमेरिका बीच में कहाँ से आ गया इस चीज़ को लेकर के? नहीं, तो भारत सरकार ने ये कह दिया कि हमने तीसरे कहीं भी इसमें नहीं। वो खंडन करना एक अलग वो है, लेकिन अभी तो जो परसेप्शन जा रहा है देश दुनिया में, यही जा रहा है कि अमेरिका की इंटरवेंशन के कारण ये चीज़ भारत सरकार जो है दबाव में आकर के ये समझौता की है। अभी देखिए, बहुत लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, आप उनकी शख्सियत के बारे में जानते ही हैं, अभी पीछे दिनों ही एक अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको सबसे बुद्धिजीवी देश का राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति कश्मीर विवाद को 1000 साल का विवाद कहे तो आपके समझ में आ सकता है। लेकिन तब भी उन्होंने अपनी, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया। भारत ने अभी तक अमेरिका का कहीं कोई नाम नहीं लिया है और भारत, वैसे विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है, और अगर आया है तो इसका पार्लियामेंट की सेशन होनी चाहिए, सरकार की तरफ से इस पर जवाब देना चाहिए। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी,
मेरा नाम अजय शर्मा है जी। बताइए प्रश्न। आप क्या करते हैं और सीज फायर होने के बाद आपके दिमाग में क्या बातें आई सबसे पहले? देखिए, अब सीज फायर जो शांत हुआ है तो इसमें तो हम भला ही चाहेंगे, और हमारे देश में भी कई लोग नागरिक, भारतीय नागरिक हमारी चिंता में थे। किसी पे 1 बच्चा है, किसी पे 2 बच्चे हैं, किसी पे 1 दर्जन है, किसी पे 5 हैं, तो चिंता में सब थे। सबके घरों में ये टेंशन थी। कोई राशन भरवा रहा था 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई लोग यहाँ से दिल्ली के लिए पलायन का प्लान कर रहा था, कोई जैसे आसाम है, नागालैंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, उधर जाने का प्रयास कर रहा था। तो लोगों के अंदर 2 दिन के अंदर लोगों के दिमाग में इतनी बड़ी चर्चाएं चलने लगी थी, घबरा गए थे लोग। तो ये अचानक प्रभु की कृपा हम मानते हैं। अब जैसे कोई अभी सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आके ये हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता कराई है, तो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात नहीं है। बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के लोग अब तक नेहरू जी से लेकर या महात्मा गांधी जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, हमारे देश के लोग सभी दयावान हैं। जितने भारतीय नेता हैं, विवेकानंद जी हो गए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, हमने अपना नुकसान करके औरों की बात मानी है। इस मामले में हम आगे रहे हैं। हम टाइट होके और एक कठोर होके कोई निर्णय हम ले नहीं पाते हैं। ये हमारी आज से कमी नहीं है, ये हमारी शुरुआत से ही कमी है। तो इस पे हमें टाइट होना, कठोर होना पड़ेगा। साथ के साथ अगर बीच में रुकावट आई है तो ये अच्छा ही हुई है। गीता में कहा गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा करता हूँ मंदिर में, तो मैं उसी भाव से कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान के मुल्क के लोग या पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान के लीडर या वहाँ की पार्लियामेंट या जो भी विधानसभा है, वहाँ के लोग अगर जरा सी भी मन में किसी प्रकार की घृणात्मक बात भारत के लिए अगर सोचते हैं, तो फिर उनके कोई आंसू पहुँचने वाला मिलेगा नहीं। अब की बार आगे से ये तय हो चुका है और ये भारत के लोग भी चाहते हैं। रही बात, हमारे देश के अंदर मुस्लिम संप्रदाय बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और हमारी दोनों बहनों को मैं नतमस्तक करता हूँ। जो हमारी सोफिया कुरैशी जी और बिहुमका सिंह जी विंग कमांडर, मैं उनको दोनों को नमन करता हूँ। दोनों बहनों ने उनकी सेना को नमन करता हूँ, सेना का धन्यवाद देता हूँ। और सेना हमारी हमेशा अपनी जान की बाजी लगा के, आज देखिए पहलगांव में जो जिन बहनों के सिंदूर पुछ गए थे, उन्हीं ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं आईना है, अन्य कंट्री के लिए भी है। बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे अन्य कंट्री हो, भारत की बात इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की स्थिति व्यवस्था मजबूत लेवल पर है। अगर हम न करते हुए ट्रंप की बात नकार कर और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जो भी अन्य सियालकोट वगैरह पाकिस्तान के जो राज्य शहर हैं, उनमें जाके हम बम धमाके या स्ट्राइक करते, तो ये एक अन्याय है, एक अन्याय होता। एक मन में ये लगता, लेकिन अन्याय तो उन्होंने हमारे साथ किया है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें एक माफ किया है। अच्छा, ये चाइना, एक बात कही जाती है कि जब ये दौर आया, ये सारी बातें आई, चाइना खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ और उसने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता, एकता के लिए हम उसके साथ खड़े हैं। और तुर्की, जिससे हमारे रिश्ते एक समय में वैसे पाकिस्तान से उसका एक रहता है, और अभी जो तुर्की के, उनका नाम बड़ा टेढ़ा है, जो प्रमुख हैं देश के, वो थोड़ा इस्लाम और उससे झुकाव दे करके इस्लामिक कंट्री से और पाकिस्तान से उनके रिश्ते, और तुर्की ने जो अभी हमने देखा कि ड्रोन जो थे, वो जो बहुत सारे ड्रोन जो डिफ्यूज़ किए गए, वो तुर्की के ड्रोन है। और तुर्की और चाइना, ये 2 मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। लोग ये मानते हैं कि चाइना की भूमिका इस पूरे तनाव में, चाइना की भूमिका बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े होने की रही। देखिए, मैं बहुत एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा। चाइना, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सेना से जुड़े हैं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, दूसरी प्रकाश डाल रहा हूँ कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों ही व्यापारी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों ही अपना फायदा सोचते, इसमें भी कोई। तो यहाँ पर दोनों के ही अहम भी टकरा रहे थे। चाइना सोच रहा था कि भारत को उलझाया जाए और ये भारत कहीं
अगर लंबा युद्ध चलता है तो भारत जरूर नेस्त नाबूद करके पाकिस्तान को और पीओके अपने कब्जे में ले लेगा। इसको बात को आप मान के चले, ये चाइना के दिमाग में था। और पीओके एक ऐसी जगह है कि जहां चाइना ने अरबों रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां कॉरिडोर बना रहा है। ये सारी जो है ना इन्वेस्ट, अगर पीओके ज्यादा लंबा युद्ध चलता तो भारत तो पीओके को ले ही लेता। और चाइना नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो, तो चाइना की भी ये सोच थी कि किसी तरह से ये युद्ध खत्म हो जाए, मगर इनको थोड़ा सा ऐसा उलझाएं जरूर रहे जो थोड़ा सा अपोजिट बने रहे। मगर इसी में जो है ना ट्रम्प ने जो भी भूमिका निभाई हो, मैं नहीं कहता हूं कि उनकी भूमिका क्या थी क्या नहीं थी, मगर जो भी है तो ये मध्यस्थता करके, मगर ट्रम्प ने ये नहीं कहा है कि भारत को कि आप जो है ना ये युद्ध विराम की घोषणा करें, नहीं कहा है। जब पाकिस्तान उनके पास गया है, ये मैं एक हवाले से खबर बता रहा हूं, मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो उन्होंने देखिए ये जो कुछ भी 4 दिनों में हुआ है, इसके जो अंदरूनी जानकारियां हैं वो 4 दिन में नहीं आती हैं। ये समय, अब देखिए इंदिरा गांधी जब निक्सन से मिलने गई थी और निक्सन से उनसे क्या बातचीत हुई थी 71 युद्ध से पहले, तो वो हेनरी किसिंजर ने जब अपनी किताब लिखी वहाँ के विदेश मंत्री ने, तब पता चला कि निक्सन को किस शब्दों में इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था और वहाँ से निकली थी तब। तो ये सारी जो घटनाक्रम है ना, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि किसका फोन आया, क्या हुआ, किसने करवाया। ये सारी बातें इतिहास में जब समय आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन इतना तो समझ में आ गया सबके कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हैं या जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो व्हाइट हाउस को बहुत करीब से कवर करते हैं, अमेरिकी रक्षा तंत्र को बहुत करीब से जानने वाले जो विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हिंदुस्तान के हमले के डर की वजह से, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बहुत एक्सकेलेट हो सकता है और किसी भी लेवल पे जा सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने इस बात को रखा कि अब युद्ध विराम या सीज फायर हो, इसके पक्ष में है। और फिर वहाँ के डीजीएमओ ने यहाँ लाइन पर बात की। आपका भी कुछ कहना है? नहीं, अभी कुछ नहीं, मेरे पास अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। अरे मेरे ही पास कौन सी है? तो फिर अननेसेसरी बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं ऑथेंटिक न्यूज़ की बात देखिए, मैं वो बातें कहता हूँ, सुनिए, ऑथेंटिक देखिए, मैं न्यूज़ की बात ऑथेंटिक का कहने का मतलब, सरकार और सेना ने इस पूरे 4 दिन में जो बातें कही, मेरे जैसे पत्रकार उससे एक शब्द, डाटा, कॉमा, फुल स्टॉप के भी आगे पीछे नहीं जाता। जो सरकार ने कहा, जो सेना ने कहा, जो विदेश सचिव ने कहा, मैंने सारी अपनी बातचीत उसी के इर्द गिर्द रखी जब तक ऑपरेशन चल रहा था। अब चूंकि सीज फायर हो गया, ये अनाउंसमेंट ऑथेंटिक है, सरकार की तरफ से हुआ है और पाकिस्तान, तो मैंने कहा अब इसमें और क्या क्या पेच है अभी मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ आपकी राय ये जानने, 140 करोड़ का देश जब युद्ध की मना स्थिति में था और ऐसे समय में एकाएक सीज फायर का जब ऐलान हुआ तो लोगों ने इसको किस तरीके से लिया, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, उनके दिमाग में क्या बातें आई, सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ। खबर तो पूरे देश का मनोबल टूटा है इस बात को सुनकर, आर्मी का भी और यहाँ की जनता का भी। नहीं, देश का कैसे टूटा? देश के रक्षा मंत्री ने बता दिया, आर्मी ने बता दिया कि हमको जितना नेस्तनाबूद इतने कम समय में करना था। देखिए एक बात मानिए, डिफेंस की तरफ से कितनी न्यूज आई है? कोई भी नहीं है। डिफेंस तो वैसे ही पहले से कह के चल रहा है कि कोई भी हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, ना ही मीडिया वालों को बोला जा रहा है कि क्या नाम आप कोई भी डिक्लेयर करें करंट न्यूज़। तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज़ को लेके। कर्नल सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह क्या बता रही थी? जो भी फुटेज आ रही है या तो पाकिस्तान से बनकर आप वो सोशल मीडिया, इधर सोशल मीडिया तो, अरे तो सरकार की भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की एक बात भी सुने कि नहीं सुने? मैंने सुनी है, बिल्कुल। वो सरकार और सेना की तरफ से ही बात कर रही थी, किसकी तरफ से कर रही थी? सरकार की बातें कोई जरूरी नहीं है कि सबको सब बातें पता हो। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर देश के इतिहास में एक खास वजह से जाना जाएगा। पहली बात तो ये कि पहलगाम में जो घटना हुई और हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर आतंकियों ने जिस तरह से उजाड़ा, उनका सुहाग,
उसका बदला आतंकियों का लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर रखा। दूसरी वजह से आप पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम कांग्रेस के नेता हैं और एक बुद्धिजीवी माने जाते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय सरकार ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को मातृशक्ति को लगाया ब्रीफिंग के लिए, और इन 4 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात को इन 2 बहादुर बेटियों ने देश के जिस तरह से पल पल की जानकारी दी और पूरी दुनिया के सामने जो हमारा चेहरा आया उसको एक अच्छा मूव चिदम्बरम ने भी बताया और पूरी दुनिया ने इस बात का, पूरे देश ने इस बात का लोहा माना। Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. We will begin with opening statements by the 3 senior officers to my right here, who have been directly overseeing operations during Operation Sindoor. We have Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations, who will cover the aspects related to land domain. Air Marshal A.K. Bharti, to his right, Director General Air Operations, will provide insights on the air domain. And to my right is Vice Admiral A.N. Pramod, Director General Naval Operations, who will cover aspects on maritime domain. Following their briefings, we will move on to the question answer session. I now request the DGMO to commence the opening brief. Thank you, Sandeep. A very good evening to all of you, ladies and gentlemen. You are all by now familiar with the brutality and the dastardly manner in which 26 innocent lives were prematurely terminated at Pahalgam on the 22nd of April. When you combine those horrific scenes and the pain of the families that the nation witnessed with numerous other recent terrorist strikes on our armed forces and defenseless civilians, we knew that the time had arrived to make yet another compelling statement of our resolve as a nation. Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs
were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Indian Air Force obviously had their assets up in the sky, and I will here request Air Marshal Bharti, the Director General of Air Operations, to detail for you the methodology that the men in blue adopted to successfully manifest this mission. Thank you, Rajiv. A very good evening, ladies and gentlemen. It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage.
The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted airstrikes. Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right. So that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps
and that we did with precision. And thereafter, we maintained a robust air defense posture, because remember, our objective was to target the terrorists and terrorist infrastructure, not any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready, yet we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night, he sent in his Jihad class of UAVs, however, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th,
less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards. On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating and combating air intrusions. We also carried out deployment to include movement of our forces in the land, sea and air domains. The night of the 9th and the 10th of May saw similar intrusions by drones and aircrafts, and this time there was a concerted effort to target airfields and some very, very important logistic installations, albeit yet again unsuccessful and denied gallantly and efficiently, I must say, by the integrated Indian Air Force and Indian Army Air Defense. We further strengthened our deployment and also initiated some pressure points to send a very clear and unambiguous message to the other side to desist from any misadventures on land. Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. And I will yet again ask Air Marshal Bharti to speak about these significant and game-changing strikes. I will thereafter request Vice Admiral Pramod, my colleague and Director General of Naval Operations, to tell us about some very telling naval maneuvers in the Arabian Sea that exerted pressure on the night of 9th and 10th of May. Over to you, sir. Thank you. Commencing about 2000 hours, that is 8 p.m. local time, on 8th of May, several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois,
Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras and IF Summer, which we have recently acquired. And some were neutralized by the Garud snipers. There was no damage on ground from these incursions and these mass raids, if I could call them, from the Pakistani side. However, following these relentless attacks on our air bases, on our forward positions and on our civilian targets, this was time to convey some message to our adversaries. And therefore, a decision was taken to strike where it would hurt. And towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UAE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. IF response was directed only at military installations, avoiding civilian and collateral damage. I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. Here is the Pasrur air defense system, if you could see. Zoomed up view, this is the radar mounted on a high tower. And after the strike, let me manage. Thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see very clearly is the after effect after we have struck. The radar head has been completely decapitated. Next slide, please. Arifwala air defense radar. In this complex, you see how it looked before, blown up image, and after really blown up. Next. Now coming to Sargoda airfield. Remember, this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes.
and we have struck this airfield. It is not, if you zoom in here, then one impact point here on the runway and second impact point of our weapon, precision weapon on the runway. And if you see this blown up, repairing going on, same here. Next. Raimiar Khan. This is the area we have struck. A deep strike out here and one complex here. So this is how it looked before, and the same. You see a big crater, another crater here, and this complex, after strike, neutralized. Next. Chaklala Airfield, Noor Khan, once again a major air base, a lot of their logistic assets out here. This was the chosen complex that we intended to strike and convey a message. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how it looked after our strike. Next. Sakar. We chose the radar site at Sakar. This is the radar site, and after it was struck, this is the aftermath, completely burnt out. Next, please. Aircraft shelter. This is how it looked before the strike, and this is how it looked after the strike. The roof of the buildings completely caved in and burnt. Next. Bolari Airfield, aircraft hangar. This is how it looked before, and this is how it looked after the precision strike. Next. Jacobabad, aircraft hangar, and this is how it looked after. Next. So what I'm trying to convey here, ladies and gentlemen, is to start with, our fight was neither with the Pakistani military nor with anybody else who's there on the other side. Our fight was with the terrorists. We neutralized the terrorists that we selected to be neutralized, and thereafter we only maintained the air defense posture. However, we were relentlessly pounded by waves after waves, night after night, by his UCAVs, by his drones, and by his other unmanned aerial systems. And that left us with no choice but to retaliate, and yet our retaliation was calibrated, it was graduated, and it was proportionate. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency
using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. Thank you. Samno Varna, Jai Hind. Now I'll hand over to Director General Military Operations for further proceedings. Ladies and gentlemen, on the 10th of May, in the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps, and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. We also decided to further speak on the 12th of May, that's tomorrow, at 1200 hours, to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. However, disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently, or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives.
Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive force. Jai Hind. Okay, ladies and gentlemen, we are now open for questions. All right, now since I would not know all of you, I would expect you to please raise the placard or your hand, and once I indicate, I expect you to please give out your name and the media group that you belong to. Keep your questions short so that we can take as many questions as possible. Also, ladies and gentlemen, kindly bear in mind that confidential aspects may not be answered by the three DGMOs. Right. I've got a lot of hands there. Let me start from the left. Left foot always in front when we start marching. So here we have to the left, okay. Yeah, 238. Hello. So this is Manas Pratimudyan from PTI, Press Trust of India. So the understanding that was reached yesterday on stopping the military operations and actions, was it for just 3 days? And what would be the cost escalation if there is violation of this understanding by the Pakistani side? And my subsequent question would be that we have a kind of ceasefire agreement with Pakistan that was finalized in 2003. So will there be some kind of similarities in frameworks between the two kind of understandings, 2003 ceasefire agreement and the current understanding on stopping military operations? And again, what are the cost that will be incurring on Pakistan if Pakistan again resorts to this kind of terrorist activities, because we have made it very clear that the cost will be very high. So I would like to have your thoughts on it. Okay, so I'll answer the latter part of the question first. I also want to add that while the initial ceasefire agreement, as you correctly pointed out, is of the 2003 vintage, but I must remind you that in 2021, in the month of February, and this was then when the crisis in eastern Ladakh was also on, the two DGMOs had spoken and arrived at a ceasefire understanding that lasted right up until this unfortunate attack at Pahalgam. Once our Foreign Secretary had announced the decisions of the CCS in the immediate wake of that attack, he had announced certain measures, and then of course Pakistan had in turn made its own announcements. Since then there have been certain violations of this ceasefire understanding, and of course after the 7th of May, like I pointed out during my statement, that there have been numerous violations on the line of control especially, and of course along the international boundary by the Pakistan Army and the Pakistan Air Force. This understanding that we spoke about yesterday, no, it was not for 3 days. It was first to stop aggressive and hostile activities immediately, let that order and direction settle down for about 36 hours, and thereafter discuss modalities, like I said, to ensure its longevity. That is tomorrow on the 12th of May. But unfortunately, we had a violation starting at approximately 1900 hours last night, and we've sent a communique, like I said, to the Pakistan Military Operations Directorate, and we will await
as to what happens tonight. All right. The cost escalation, I'll leave it to your best imagination. I've already said that the response will be fierce and punitive. Now, the right foot forward. Yeah. Sir, I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, my question is that you talked about the loss of lives to the Pakistan army, that was around 35 to 40 kills secured by the Indian army. Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan army in both army and air force attacks, sir? And how good was the performance of the BrahMos, Scalp and the S-400 during the operations? And sir, since we have just one no line, multiple sir. questions, please. Sir, all right. And since sir, we have achieved such a spectacular, we have made good achievements in this entire operation, can we say that we have emerged victorious, or we have a big upper hand over the Pakistanis in this entire conflict? Thank you very much, sir. So I'll answer the question about the loss of lives on the other side. Of course, there are various means to ascertain that number. There is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, the responses of the Pakistan Army were also on Indian Army or the Indian Armed Forces infrastructure. Let me put it that way. So that's why I did not cover casualties of the Pakistan Army, at least in the initial phases of battle, because those were not our targets. Our targets were terror-oriented, and of course later, once they launched air intrusions and air operations on our infrastructure, we've used heavier weapons, and of course there would have been casualties, but those are still being assessed. The effects of the weapons that you mentioned, I will request Air Marshal Bharti to apprise all of you about those. Good evening, Mr. Sujit. How are you? Ajit. Okay, we're meeting after some time. I never mentioned about any of the weapons that we used. Check. Okay. What I was saying, that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right. So we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. And the last part of your question, I wonder if you read out the tweet on ADG-PI at midnight once we'd done what we had to in Operation Sindoor. And that's credit to my friend here on the left. Justice has been served, Ajit. That is all that I will say. Ajit, I'll request you to, refrain putting words into his mouth. All right. I'll come back to the left. 147. Sorry, 47. No, one word. 47. Did I see it here or? Yeah. Good evening, gentlemen. Sorry, 147. I saw it there. Sorry. Yeah. Since I've already said 147. Start, please. Hi, sir. Good evening. This is Shivam Patel from Reuters News Agency. Thank you for giving me the opportunity. My question, sir, is how many military targets
did Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attacks from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there in total on both sides, if you can give details? Thank you. I'm sorry, where are you? I haven't spotted his... Here's to the right. Okay. Can you just repeat that for me, please? Sure, sir. So my name is Shivam Patel. I'm from Reuters News Agency. My question is, how many military targets in total did the Indian Armed Forces strike in Pakistan in response to the attack from Pakistan? How were these targets selected? And how many troop casualties have been there on both sides, if you can? So you're speaking of the targets that I mentioned in the wake of the attack at Pahalgam, right? Military targets, sir, after full response. Yeah, I think it's amply clear to everybody here that the Pakistan army has not crossed the international boundary, neither in the plain sector nor on the line of control. So the intrusions have been in the air. There have been certain attempts on the line of control when ceasefire violations have been on to try and infiltrate and carry out and perpetrate activities that we are all very well familiar with. Whether these are by terrorists or by the Pakistan army or its special forces and commandos is difficult to say, but each of these have been effectively thwarted. So therefore, as far as engagements of military targets on the other side is concerned, I thought Air Marshal Bharti covered those very well and in detail, and he also mentioned as to how they went about targeting those. I think those images were very clear and very, very graphic in telling us as to what we needed to hit. And you'll remember right at the outset I said that we even went into what was the construction in each of these locations and therefore decided on the vector that had to be utilized. Please. Okay, if I could add to what the DGMO has said, I have already detailed the targets. Now, whether it is X numbers or Y numbers that is immaterial. And what damage have we inflicted? You have seen. What are the casualties on the other side? As I said, that is for them to count. As far as we are concerned, from the air defense side, if they had a choice, they would have definitely come in. They are fighters, there are more numbers of UCAVs. It is not that they did not intend to come in. It is only that our robust AD posture prevented them from coming in. So that must be known, and that must be realized by all the audience here. Yeah, I'll come to the left now, 24. Good evening, sir. This is Anvesh Rath from Z. Sir, I wanted to know on the first briefing which was done by FS and two representatives from Air Force and Army, you showed a list where there was 21 places in that list. You have stuck 9. Are more operations going to be held? Is Operation Sindoor still on? And the second question, thank you, sir. Thank you so much. And also, I want to congratulate all three of you for a fantastic operation that you guys have done. Thank you so much. Thank you so much for that one question. Yeah. Sir, the question. Unfortunately, Rath, is that your name? I'm sorry. As far as operational details are concerned, I am not in a position to share those right now. But I think I'll take a cue from Pramod. He said towards the end that the Indian Navy is still in a posture that is deterrent. And I have already made it very clear towards the end of what I said that it's only a couple of hours ago that the Chief of Army Staff has carried out a security review and he's authorized our Army commanders to deal with violations of any kind from across the borders in a manner that they deem fit. So again, to reiterate, the response will be fierce and it will be punitive.
Yes.